Now the first question, as there occurs more and more condensation of chromatin during cell division, there occurs condensation of chromatin. Do you know that in cell division, right, condensation of chromosome occurs? ये तो पता है हमको, है ना? More and more condensation. You know that what is the difference? There are two terms, if you remember, heterochromatin and euchromatin. I explained to you. Do you know what is the difference in heterochromatin and euchromatin? More condensed part, heterochromatin. Euchromatin, yes, less condensed part in euchromatin. So darkly stained area is heterochromatin because more and more condensation, and lightly stained area is euchromatin, if you remember. Okay, so more and more condensation, this means it's giving a hint. More and more condensation hoga, then occurs what? Increase in heterochromatin, increase in euchromatin, differentiation of heterochromatin and euchromatin. This we can easily we can do by comparing that heterochromatin and euchromatin part. That lightly stained area is euchromatin and darkly stained area is, so more condensed part is heterochromatin, darkly stained area is heterochromatin. So out of the four, which one is the most appropriate answer? Most appropriate, first one. First one, increase in heterochromatin, because it's written, clearly written here, more and more condensation of chromatin. Done. Question number 2. Replication of nuclear DNA. This one is easy. 3 phases, G1, S, G2. Right? So replication of nuclear DNA. Come on, give the answer. Hurry up fast. Replication of DNA occurs in S phase. Any doubt? DNA gets duplicated in S phase, right? Now the next one, the number of DNA chromosome at G2 stage. Number of DNA chromosome, number of DNA molecule actually. Number of DNA molecule. We know that in interphase, 3 stages are there. 3 stages are there. G1, S, and come on, G2, right? This one is G1, this is S, this is G2. G1, number of DNA molecule, 1C. Here, when it enters 1C, after replication, it will become 2C. Yes? Number of DNA. When before replication, number of chromatid, that is DNA molecule chromatid 1, DNA molecule 1. After replication, number of chromatid 2. So DNA molecule become 2 in each chromosome. So what will be the answer? Number of DNA in chromosome at G2 stage. How many? What is the answer? Right, it is 2. Am I audible? Yes, ma'am. So why you are not giving the answer? Pranjal? mic open नहीं हुआ था, ma'am अभी हुआ है. Okay. So the number of DNA molecule in chromosome is 2 at G2 stage. Is it clear? Yes, ma'am. Which of the following stage is affected by colchicum? Colchicum, which interferes with the formation of spindle fiber. Spindle का assemblage नहीं होने देता. Spindle fiber नहीं बनने देता है colchicum. So artificially used to stop the mitosis, to discontinue the mitosis,
to stop the formation of mitotic spindle apparatus, colchicum is used, right? But which of the following stage is affected? जब spindle fiber का apparatus ka formation and attachment of that chromatids to the spindle fiber is blocked. In which stage? In metaphase. This is very important. Colchicum, which is artificially used in metaphase. Okay. G0 stage of cells in eukaryotic cell denotes. G0, if you remember, there is a stage. This one is interphase, G1, then S, then G2, and here is the mitotic phase. Here is the G1 phase. The cells who do not divide enter into which stage? Which phase? G0. G0. Is G0 is permanent or temporary? Temporary. Temporary stage. What is actually not happening in G0? Cell division. It is also known as the another name of G0 is quiescent phase. Quiescent phase doesn't mean that the cell is inactive. The cell is very much active. All the metabolic activities are going on, only the division is not occurring. So quiescent phase, cell is metabolically active, very much active, but the cell is not going to divide. And that is why it enters in G0 so that no synthesis of RNA, right? No synthesis of proteins which are required. वो synthesis नहीं होता है. हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी सेल है बेटा जो G0 में परमानेंटली रहती है? कौन सी सेल हमारी बॉडी में डिवाइड नहीं करती? Nerve cell. Nerve cell. So G0 state of cells in eukaryotic cell denotes what? पूरा सेल साइकिल से सेल ये बाहर ही निकल गई है. Check point before entering the next phase? No. Pausing in the middle of the cycle to cope up with the temporary delay. Temporary delay? No. Right? Death of a cell? No, not at all. Exit of cells from cell cycle? Yes, this is the most appropriate answer. Exit of cells from cell cycle. Clear? Yes, ma'am. Yes. Yes. So now the next. Mitosis is the process by which eukaryotic cell. See, bio में यही problem है ना? When we read out the answers, the options, कुछ सारे सही लगते हैं, and then we come to know the exact answer. एक एक करके eliminate करना है, and read all the 4 options. Expose the gene for protein synthesis. Become specialized in structure and function. Eukaryotic cell becomes specialized. That is known as differentiation. That occurs afterwards. First the cell divides, then it elongates, and then it gets matured, specialized. Multiply. Okay, this may be the answer. Read out the next one. Grow. Out of the 2, this cannot be the answer. This cannot be the answer. Out of the 2, which one is the most appropriate? Multiply. Multiply. Meiosis में 1 to 4 cells हो रहा है. क्या ये multiply नहीं हो रहा? क्या multiply word growth में नहीं आ रहा? See, what is the difference in multiply and growth? Grow का मतलब increase size. Growth is only size, beta. Yeah, this mitosis is the process by which eukaryotic cell, see, grow का मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो. After division, then cell grows in size. Only the single celled eukaryotic cell where the growth, growth and the reproduction and the mitosis and all, हम cell division से कर सकते हैं. Otherwise, the most appropriate answer, that is multiply.
So the answer is third one, multiplication. Ma'am, why is it not grow? Because the growth is not always multiplication. The growth is elongation also. The growth is increase in size also, right? Up to a definite size only. Clear? Eukaryotic cells grow may be the answer, but multiply. Zygote becomes complete cell. New cells are replaced. The old cells are replaced by new cells. New cells replace the worn out cells. ये सब multiplication की वजह से. ठीक है? Yes, ma'am. The next one. How many mitotic divisions must occur in a cell of root tip to form 256 mitosis? One cell give rise to two daughter cells. Ma'am, 8. Why 8? Why not 256 divided by 2? Why not 128? मैम बिकॉज हर बार जो सेल डबल हो रही है वो भी तो डिवाइड होएगी, तो उसका और रिपीटेशन होता जाएगा. एक्चुअली पूछा क्या है? हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स अकर? सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आफ्टर 8 जनरेशन. आपने ये कैसे किया? 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 13 to 64, right? 128 and then 256. This is how? Yes? Yes, ma'am. How many mitotic divisions? So number of actually हमने generations निकाली है ना? 8 cycles of mitotic division. So the answer is 8. Good one. Okay. Now the next. The best stage to count the number of chromosomes during mitosis. Detailed structure. So many times we have studied this. Detailed structure and number of chromosomes can be studied. In which phase? In which phase? Metaphase. Metaphase. Right. Why not anaphase? Why not anaphase? एनाफेज में क्या दिखेगा? एनाफेज में तो बच्चे even the chromatids separate, so number of chromosomes will become double, because these chromatids only will behave as chromosome, because the DNA is the complete DNA molecule is there. So chromosome तो number में double हो जाते हैं, because centromere divides, chromatids separate, chromatids moves towards opposite pole, and they can be considered as chromosome. Chromatids will be considered as chromosome only because the DNA molecule, complete DNA is there in one chromatid. So count the number of chromosome, metaphase. Of course, each chromosome is having 2 chromatids. Okay. So the answer is metaphase. Ma'am. हाँ, come on. Yes, बेटा. मैम एनाफेज में भी तो मतलब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, फिर भी आप उन्हें काउंट और उनको देख तो सकते हो ना? नहीं देख सकते हैं. यू विल स्टडी द शेप, राइट? ये हमने पढ़ा था. बट काउंट करोगे तो डबल नहीं दिखेंगे आपको. सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको कहाँ दिखेंगे? यहां तो आपको डबल दिखेंगे क्रोमोसोम नंबर. तो आप पहले डबल काउंट करो, फिर उसका हाफ करो. व्हाट इज द सेंस? You can see only chromatids in anaphase. So if you want to know the number, why? Because metaphase में कहाँ लगे होते हैं बच्चे? Metaphase में लगे होते हैं metaphasic plate पे. So the chromosome number can be easily count.
Is it clear? Yes. Yes, ma'am. नंबर मेटाफिजिक प्लेट पे होते हैं इधर उधर. प्रोफेज एंड में. See, the completion of the mitotic spindle and the arrangement of the chromosomes on spindle fiber, that actually denotes the beginning of the metaphase. So during metaphase, the chromosomes lie on equatorial plate, and you can easily see the detailed structure and the chromosome number. So metaphase. During interphase, RNA and proteins are synthesized in. Now, these are the two things, RNA and proteins. Interphase, 3 phases, right? Interphase, 3 phases are there, G1, S and G2. G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है? Come on, again the revision. What is actually happening in G1? In G1, all the RNA molecules which are required, all the proteins which are required. S, DNA, centriole, histones. DNA duplication, centriole duplication, histone protein synthesis. G2. These two will continue, and these two will continue, and the proteins which are especially, required for spindle formation. Because after G2, M phase will begin. उसमें spindle चाहिएगा. So spindle formation protein, that is tubulinol synthesis, special protein tubulin synthesis in G2, cell organelles, because they will be required. So cell organelles, and of course more and all other proteins which are required, उनका synthesis होगा G2 में. So G1, RNA and proteins are synthesized. क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे आप? What would be the answer? G1, G2. G1, G2 both. Yes. So the answer is 4th. Mitosis result in reduction in chromosome number, Constant chromosome number. constant chromosome number. Doubling of chromosome, no. Reduction in chromosome, no. Increase in cell volume. See, when the cell divides, the cell in interphase become flat, okay, and then it become more or less spherical in shape, and then during the anaphase, it will become elongated. That's another thing. After division, then in the increase in volume, that is a growth. Before the division, cell grows in size. Multiplication के पहले growth phase होता है, cell बड़ी होती है, right? And then the cell starts division. That's another thing. But mitosis result in constant number of chromosomes. This is actually the significance of mitosis. And anaphase chromosomes contain 1 DNA molecule, 3 DNA molecule, 2 DNA molecule, 4 DNA molecule. Again and again, सारे concepts in all the questions, सारे concepts revise हो रहे हैं. G1, 1 DNA molecule, S, 2 DNA molecule, G2, 2 DNA molecule. Prophase, come on fast. Prophase, ये इंटरफेस था जब माइटोटिक फेज शुरू हुआ. प्रोफेज, 2 DNA molecule. मेटाफेज, 2 DNA molecule. Then centromere division. Anaphase, how many DNA molecule? 1. 1. Anaphase, 1 DNA molecule. Telophase, 1 DNA molecule. Then interphase again begins, right? So anaphase, what would be the answer? How many DNA molecules? 1. Okay. Next question. Normal cellular activities such as protein synthesis occur primarily during protein Interphase. synthesis. Interphase.
There is no specification given here. Interphase. At G1 stage, which phenomenon take place? At G1 stage, which phenomenon takes place? DNA synthesis? No, not at all. RNA synthesis? Yeah, it may be the answer. Reverse transcriptase? What is reverse transcriptase? Anyone? Formation of DNA from RNA. Reverse of central dogma. हमेशा इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है. डीएनए से डीएनए बनता है जिसको आप रेप्लिकेशन बोलते हो. डीएनए से आरएनए बनता है जिसको आप क्या बोलते हो बच्चे? क्या बोलते हैं हम? डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली डिकोडिंग. A transcript is formed in transcription, and that transcript will form the protein through the process. That process is known as good translation. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में उल्टा हो जाता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस में होना चाहिए? ये इंफॉर्मेशन हमेशा सेंट्रल डॉगमा जो है वो ऑल यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रल डॉगमा होता है. इंफॉर्मेशन एक ही साइड फ्लो करती है. फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यू टोल्ड मी दैट फ्रॉम आरएनए टू डीएनए रिवर्स हो गया ना. ये कहाँ होगा बेटा? आरएनए टू डीएनए कहाँ बनेगा? प्रोकैरियोट. और उस प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में भी नहीं बनता क्योंकि बैक्टीरिया में भी डीएनए से आरएनए ही बनता है. बैक्टीरिया में भी नहीं होता. आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? वायरसेस. वायरस. वायरस में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. जहां पे हम एज वर्ड यूज करते हैं तो हमें पता चलता है एंजाइम है ये. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. क्या जरूरत है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की? जेनेटिक मटेरियल सिर्फ वायरस ही ऐसा है जिसमें जेनेटिक मटेरियल हो सकता है आरएनए. बाकी तो कहीं हो ही नहीं सकता. जब वायरस को किसी होस्ट के डीएनए में एंटर होना है, दैट इज मस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल. वायरस डीएनए होस्ट में एंटर होता है, देन ओनली it gets incorporated in the host DNA and then directs the host DNA to form viral RNA and viral protein so that virus particles can be formed. So it requires what? Viral DNA. लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आरएनए से डीएनए बनता है, आप उसको क्या बोलोगे? कॉपिंग ऑफ डीएनए. कॉपी ऑफ डीएनए बोलोगे उसको. पता है ऐसे लिखते हैं cDNA. और cDNA का फुल फॉर्म क्या होगा? यू नो दैट? कॉपी ऑफ डीएनए. No, this C is not copy. This C here is complementary. You know, complementary. इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया. बाकी तो डीएनए से आरएनए बनता है ना. और डीएनए से डीएनए बनने को हम कॉपी ऑफ डीएनए कहते हैं. जब डीएनए से डीएनए बनाएंगे ना तब उसको कॉपी ऑफ डीएनए बोलेंगे. जब आरएनए से हम डीएनए बनाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. Complementary, right? So the cDNA is formed. That is reverse transcription. So at G1 stage, which phenomenon takes place? Not reverse transcriptase, not DNA synthesis, RNA synthesis. All of them no. So what would be the answer? RNA. Clear? हमेशा याद रखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस में होता है? उन वायरस में जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल. To get incorporated in host DNA, reverse transcription occur with the help of reverse transcriptase enzyme. Now the next question. In mitosis, the movement of chromosome requires Spindle fiber. presence. Movement of chromosome requires. See, Harpriya, read out all the options, right? And then
Exclude the options and reach to the most appropriate option. Presence of centromere. Why this cannot be the answer? Presence of centromere. मुझे एक बात बताओ आप, एनाफेज में जब स्पिंडल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, समझ रहे हो, ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम बोल रहा है, मतलब ये वाला मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है ना, when it moves towards opposite poles. Can you tell me सेंट्रोमियर जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सेंट्रोमियर होगा तभी तो क्रोमेटिड अटैच होंगे, देन सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा तभी तो क्रोमेटिड सेपरेट होंगे. Chromatids will move with the help of this centromere, which is attached on both the side by kinetochore. Centromere division occurs and movement of chromatids occur in anaphase. Movement of chromatids, these chromatids can be considered as chromosomes. So movement of chromosomes required. Which structure? Which structure? Yes. Centromere. Plasma lemma, this is not required. Spindle fiber. See, spindle fiber, continuous spindle fiber, discontinuous spindle fiber, interzonal fiber, all are there. Anaphase में spindle fiber is there to assist the movement of chromosome. Which structure is required? Harpriya, what will be the most appropriate answer? Spindle fiber will help. Spindle fiber will assist movement of chromosome. But it requires, ये तभी possible है जब ये काइनेटोकोर इस सेंट्रियोल से अटैच्ड होगा स्पिंडल फाइबर से, नहीं तो क्रोमोसोम को पकड़ेगा कैसे, खींचेगा कैसे? आप समझ रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, so presence of centromere, right? Most appropriate. Now DNA replication occurs during, ये तो आपको पता है. The DNA replication occurs during interphase, yes, and S phase. Okay, the first question number 1. When a cell of diameter 2 meter grows to double its diameter, है ना, 2 मीटर की डायमीटर है सेल का, यदि डायमीटर हम डबल कर दें, ओके, what will happen to its surface area volume ratio? एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो में क्या फर्क होगा, क्या इफेक्ट आएगा यदि डायमीटर हम डबल कर दें? हाउ विल यू सॉल्व इट? हमेशा एरिया होता है वैसे करते हैं एरिया, जैसे एल्वियोलाई yes. बहुत छोटे होते हैं तो उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम काफी बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो रहा होगा तो इसका कम ही होगा. बेटा why do you मतलब apply the rule, why don't you solve it numerically? क्योंकि it reduce to half और it decreases. आप जो कह रहे हो यदि हम अप्लाई करेंगे तो डिक्रीजेस हो जाएगा, राइट? वो भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है ना, न्यूमरल वैल्यूज दी हुई है कि 2 मीटर है, उसका डबल कर दिया तो सरफेस एरिया रिलेशनशिप A अपॉन V कितना हो जाएगा? एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, राइट? अपन ने डबल किया तो ये हो जाएगा, है ना, 4, और हमने यदि वॉल्यूम डबल किया यदि डायमीटर तो एरिया तो 4 हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया, 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाफ सरफेस एरिया. yes, so it reduced to half. First answer clear? Yes, ma'am. The next one, which structure is present in both prokaryotic and eukaryotic cell? Eukaryotic plant cell especially, not cell, plant cell. Cell wall. Cell wall. Cell Yes, cell wall. Okay,
The prokaryotic cells are characterized by presence of distinct nuclear membrane, prokaryotic cell, absence of chromatin material. Read all the 4 options. The presence of distinct chromosome. See, ये तो है नहीं पता है हमने, ये नहीं है पता है हमने. Absence of yes, absence of nuclear membrane. डाउट है. Second or fourth में doubt है. See, absence of chromatin material is what? Chromosome is made up of chromatin. Chromosome तो होता है ना बेटा. One chromosome is there. One DNA molecule is there. तो DNA molecule होगा तो chromatin तो होगा ना बच्चा. Chromatin forms chromosome, right? Condensation होके. मैम जब chromatin हाँ decondensed form में रहता है बेटा हमेशा chromatin material resting cell में. जब डिवीजन आता है तो वो कंडेंस्ड होके रॉड शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में हमें दिखाई देता है क्योंकि कंडेंसेशन हो जाता है. बट क्रोमेटिन इज व्हाट? इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए ओनली ना. डीएनए देन क्रोमेटिन देन क्रोमोसोम. ओके, सो एब्सेंस ऑफ द आंसर विल बी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यस. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों क्या है? दोनों क्या है? Prokaryote, right? So it is composed of muramic acid, chitin, lipoprotein, or glycoglipid. What would be the answer? Muramic acid. Why? Cell wall. Lipoproteinaceous is cell membrane. Muramic acid. See, cell wall is made up of NAG and NAM, peptidoglycan, NAG and NAM. And acetyl glucosamine and acetyl muramic acid. So muramic acid, because both are prokaryote. Clear? Eukaryotic cell wall is made up of cellulose, and then the second primary cell wall. Then secondary cell wall may be having, deposition of different materials. Otherwise, cellulosic. Prokaryotic cell wall is made up of peptidoglycan, bacterial cell wall. Eukaryotic cells are different from prokaryotic cell. Now the feature of eukaryotic cell out of the 4. True nucleus. Okay. This may be the answer. Now we have to read out, make it a rule. Read out all the 4 options. Then find out the most appropriate answer, right? 70s ribosome nahi hota. Mitochondria in mesosome form. Ulta likha hai yahan. Mitochondria in mesosome form hota hai prokaryote. Right? Only smooth, no, smooth and rough, both are there. So these 3 are not there. The true nucleus is the correct answer. Got it? Robert Brown discovered nucleus or nucleolus or cell. Nucleus, nucleolus, Fontana ne kiya tha, then cell wall, then mitochondria. See, nucleus and nucleolus, Robert Brown discovered brown in onion root tip. Now the next question. Root tip cells. Mitosis study कर रहा था ना, उस समय देखा था. One of these is a single membrane organelle. Single membrane bound organelles. Lysosome, single. Yes. Mitochondria, double membrane. Nucleus, double membrane, plastid. All these 3 are double membrane. So single membrane bound. Lysosome. Yes. Now the next one. Prokaryotic cell does not have nucleolus, membrane bound cell organelles, and centrioles. All of these. All of these. Even the centriole is present only in animal cell. Okay. So prokaryotic cells does not have all these membrane bound, non-membrane bound cell organelles, especially. Nucleolus is non-membrane bound, right? Yes. Centriole non-membrane bound. Both are non-membrane bound, and here is the membrane bound. Which non-membrane bound cell organelle present in prokaryotic cell? Which non-membrane? Yes. Ribosome. Ribosomes. Ribosomes are also non-membrane bound. Which type of ribosomes in prokaryotic cell? 70S. And 2 subunits of 70S. Larger 50S, 50S. 30S.
Good. 50s, 30s. Now, figure of cork cell observed by Robert Hooke. They were published in. First time the cell was discovered by Robert Hooke, in 1865, right? Now, this Robert Hooke, 1665, right? Now, this Robert Hooke discovered first time the cell in as a in the dead cork cell, right? He Yes, actually saw cork is the outermost dead part of woody trunk. 1665. In which book he published his Species Plantarum? No. Species No. Plantarum Micrographia. This book. The book he wrote was Micrographia. First time. Okay. Hmm. The cells, because he gave Ma'am. the name cella. He gave the name cella, and the cella is what? Because he saw the little honeycomb structure, that this one, this hexagonal, this one, and this was actually the dead cell honeycomb like structure. So a little room, cella means a little room. Little room जैसे structures उसने देखे थे. Cella, he gave the term. Okay, so little room. So cell, first time term coined by Robert Hooke. The cells discovered in the thin section of cork by Robert Hooke were actually, उसने जो सेल देखी थी वो सेल क्या थी, क्या देखा Cell था wall. इसने? Yes, cell wall he observed, and that is why we know that Robert Hooke discovered actually the dead cell. Okay, so he observed the cells with cell wall actually. Omnis cellula e cellula. This aphorism is, this statement was given by. What is the meaning of this statement? Meaning of this statement is? New cell originate from pre-existing cells. Yes. New cell always originate from pre-existing cells. ये किसने दिया था और ये किस? Who gave this statement? Virchow. Yeah, Rudolf Virchow. In which year? In which year? 1839. 1855. 1839-38 में सबसे पहले श्लाइडन एंड श्वान ने सेल थियरी दिया था. Basis of cell theory, right? So basis of cell theory was what? Basis of cell theory was that all the cells are the basic and structural function unit of all the living organisms are cells only. But उन्होंने cells का origin de novo बता दिया था, that always the new cells arise. That was actually the major, drawback, demerit of their cell theory, Schleiden and Schwann. So Rudolf Virchow, he expanded the cell theory, and in new cell theory, he gave the statement that existing cells always, new cells always originate from pre-existing cells. Cells never originate de novo. So Rudolf Virchow, okay? Yes, ma'am. The theory of cellular lineage is not applicable to cellular lineage. What does it mean? That all the organisms are made up of the basic structure and function unit is cell. Cells forms, then tissues, and then organs, and then organ system, and then organism. So theory of cellular lineage is not applicable to algae. Algae में तो cells होते हैं, right? चाहे blue green हो, चाहे green algae हो, eukaryotic हो. Fungi, yes, of course, eukaryotic, right? Virus and lichen. What are lichens? Symbiotic relationship between algae and fungi, right? Biotic relationship. Obligate relationship. Obligate relationship है ये. Mutualism होता है, obligate relationship between two. Independent existence नहीं है. Virus, intracellular obligate parasite, है ना? Yes, ma'am. So virus में नहीं होता है.
So the theory of cellular lineage is not applicable to, that is the Viruses. exception of cell theory. Yes, this is the example of virus, is the example of exception of cell theory. Now the next question. Cellular totipotency is demonstrated by what is totipotency? The ability to give rise to other cells. Yeah, can be differentiated into any kind. Can be differentiated into any kind. Any type. ठीक है, क्योंकि हमेशा पहले जो सेल्स होती हैं उनमें लाइक प्लांट में पढ़ा है आपने, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, these new cells will grow, become bigger in size, right? That is meristematic zone, then zone of elongation, and then zone of maturation, है ना? जो मैच्यूरेशन आता है उसमें फिर जाइलम और फ्लोएम बनता है. द सेम वे इन एनिमल्स आल्सो, द सेल्स आर फॉर्म्ड, देन द सेल्स, हमारे में क्या था एम्ब्रियो में? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. Ectoderm will form different organ, mesoderm will form different system, organ system, endoderm is going to form different organ system. Totipotency, only gymnosperm cell, gymnosperm of course eukaryotic plant cell, multicellular. All plant cells, third one, all eukaryotic cell, only bacterial cell. भैया बैक्टीरियल सेल में तो वैसे भी डिफरेंशिएशन नहीं होता. ओके, plant cell, gymnosperm cell already included in plant cell. Eukaryotic cell, all plant cell are already included in eukaryotic cell. Is totipotency present in plant and animal both? Yes, ma'am. A common characteristic feature of plant seed tube and most of the mammalian erythrocyte is absence of mitochondria, presence of cell wall. So mitochondria is very much present. Presence of cell wall, sieve tube, cell wall is there. आरबीसी में नहीं है बट सीव ट्यूब में है. प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है. एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, enucleated. Sieve tube also enucleated. Human RBC also enucleated, right? Which are, so what would be the answer? Absence of nucleus. Which one of these is not a eukaryote? Euglena, it comes in protista, right? Link between plant and animal. Okay. So very much eukaryotic cell. Anabina. Anabina comes in which group? Anabina comes in which group? Blue-green algae. Yes, ma'am. किसमें आता है blue-green algae? Bacteria. Eukaryote. Spirogyra? Green alga. Algae. So किसमें आ रहा है ये? Of course, green alga इसलिए eukaryotic. Agaricus, mushroom, Basidiomycetes, fungus, किसमें आता है बच्चे? Eukaryotic. Yeah. So what would be the answer? Anamina. Anabina. Right? Rigidity of cell wall is due to rigidity. See, parenchyma, living cell, right? Permanent cell, but living cell. Yes, ma'am. Parenchyma से हमने पढ़ा था collenchyma, if you remember. Collenchyma has किसकी थिकनिंग थी? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की. क्या प्रोवाइड कर रहा था हेमीसेलुलोज और पैक्टिन उसमें? Rigidity. Flexibility, mechanical strength, bending without tearing, if you remember. Petiole, margin सब में था. So mechanical strength, flexibility दे रहा था पैक्टिन, rigidity नहीं दे रहा था. Structural strength कब आ रही थी? Structural strength कब आ रही थी? जब क्या आ गया था?
Do you remember? Sclerenchyma. Sclerenchyma. किसका डिपोजिशन हो रहा था? Lignin. Lignin का. And lignin deposition in all the surface, है ना? All the, चारों तरफ लिग्निन आने से सेल्स क्या हुई थी फिर? डेड हो गई थी. सो पेरेन्काइमा लिविंग थी, कॉलनकाइमा लिविंग थी, स्क्लेरेन्काइमा डेड थी. सो रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है सेल वॉल को? Lignin. लिग्निन. ओके. द म्यूरिन. सुबेरिन किसमें होता है बच्चे? Casparian Coxel. strips. वेरी गुड. कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ होती है? Endodermis of root. Endodermis of root. Very good. Endodermis of root. Suberin is a waxy coating, right? ये कॉर्क में भी होता है. इट्स अ impervious layer. Waxy coating है, impervious layer है, right? The murine again. Murine found in bacterial cell wall is a derivative of. Bacterial cell wall किसका बना होता है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन. Glycogen. पेप्टिडोग्लाइकन के कंपोनेंट्स क्या हैं? सी, पेप्टिडो मतलब है पेप्टाइड प्रोटीन. ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ये दोनों क्या है? सी, पेप्टिडोग्लाइकन विच हैज टू कंपोनेंट्स इफ यू रिमेंबर. NAM. NAM. NAG and NAM. So N-acetyl ग्लूकोजामीन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों किसके डेरिवेटिव है बच्चे? शुगर डेरिवेटिव है. इज इट क्लियर? शुगर डेरिवेटिव. यूरिन इज नैग एंड नैम इज द पार्ट ऑफ ग्लाइकन. ग्लाइकन इज व्हाट? Sugar. So murine found in bacterial cell wall is a derivative of Sugar. sugar. So answer is sugar derivative. Clear? It's not fat, it's not protein, it's organic acid नहीं है. That is the sugar. Now the next one. Intercellular material between two adjacent plant cell. It is Middle lamella. very good. Middle lamella. The first layer. See, Harpriya, please read out all the 4 options. Don't jump to the... Okay. Primary wall? नहीं. Why not? Why middle Because- lamella? Because outermost is middle lamella. Then comes secondary wall. Then primary Why wall. Then outermost? primary wall. बच्चे, why outermost is middle lamella? See, Because it outermost is layer तो first cell secondary wall है. layer. See, 2 cells के बीच में होती है middle lamella. outermost हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं because outermost is primary cell wall. outermost is primary cell wall between the 2 middle lamella. कब बनती है ये? This middle lamella is formed. It is the layer, the first layer which is formed at the time of cytokinesis in plant cell. Do you remember? Yes, ma'am. साइटोकाइनेसिस जब प्लांट सेल में हो रहा है तो मिडिल लेमेला सबसे पहले बनती है. इसलिए द इंटरसेलुलर मटेरियल बिटवीन द 2 प्लांट सेल, बिटवीन द इंटरसेलुलर मटेरियल बिटवीन द 2 प्लांट सेल, मिडिल लेमेला. सो द आंसर इज मिडिल लेमेला. ओके. द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑफ मिडिल लेमेला इज, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगी इन दिस क्वेश्चन? मिडिल लेमेला, देन प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल. Secondary में first layer, second layer, right? Then tertiary, and then inside that Plasma membrane. Yeah. Okay. Now the next question I asked you, that is the most abundant substance of middle lamella. Middle lamella is made up of calcium and magnesium. Pectates. Yes. Calcium and magnesium pectate. The most abundant substance of middle lamella. Okay. The mineral present in cell wall. Do you remember the cell wall structure I taught you? Warp and weft structure. Cellulosic fibril, hemicellulosic fibril, right?
then pectin, and they are joined by which bridge? If you remember. Good. So most abundant mineral present in cell wall will be कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट, मिडिल लैमेला का होता है, इसलिए ये नहीं सोचना है हमें, है ना, कि इट मैम बोथ द आंसर्स, नो, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इज कैल्शियम. ओके, यस, कैल्शियम. नाउ very interesting question. Here is the answer pectin, here is the answer calcium, here is the answer middle lamella. Ripening fruits soften due to ripening of fruit. अभी अभी हमने ना मिडिल लेमेला पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, सेल्स के बीच का इंटरसेलुलर मटेरियल. जब रॉ फ्रूट होता है ना तो ये मटेरियल इंटैक्ट होता है, मिडिल लेमेला, ठीक है. एंड व्हेन द सेल स्टार्ट्स राइपनिंग, यू नो दैट एमाइलेज एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, और जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑल राइट, और सॉफ्ट हो जाता है वो, है ना. क्यों हो जाता है सॉफ्ट? सॉफ्ट क्यों हो जाता है? जेली फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक पीएच, conversion of starch into sugar, solubilization of pectate of middle lamella. What would be the most appropriate answer? Incorporation of pectate. Pectate आ जाता है या pectate solubilize हो जाता है? The answer is solubilization of pectate of middle lamella. ये स्टेप्स होते हैं, लेकिन सॉफ्ट हो जाते हैं टिश्यूज ड्यू टू राइपनिंग हो रहा है, ये सब चीज हो रही है. सॉफ्ट कब हो जाएंगे? मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है, सेल्स दूर दूर हो जाते हैं. इज इट क्लियर? सो द आंसर इज solubilization of pectate of middle lamella. Okay, now the next question. Phlegmoplast is the precursor of, what is phlegmoplast? A type of plastid. Who's going to form phlegmoplast? Phlegmoplast is the बेटा सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है, ये जब प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो जो गोल्जी बॉडी है वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाएगा. इट इज एक्चुअली द मटेरियल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, एंड दिस फ्रेगमोप्लास्ट विल कम एंड लाई. दिस इज एनाफेज, टीलोफेज ऑफ प्लांट सेल. एनाफेज में क्रोमोसोम दूर दूर जाएंगे और टीलोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा. नाउ द साइटोकाइनेसिस जब होना है तो आपको मालूम है सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है प्लांट सेल में. सो द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, दिस इज फ्रेगमोप्लास्ट. इसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट. आके सेंटर पे लगता है, देन इट विल ग्रो सेंट्रीफ्यूगली, राइट, स्प्रेड होता है बाहर की तरफ, और धीरे धीरे मिडिल लैमेला इज फॉर्म. ये फ्रेगमोप्लास्ट कौन बनाता है? Calcium. मैग्नीशियम पैक्टेट ये गोल्जी बॉडी बनाता है. फ्रेगमोप्लास्ट इज मेन कंपोनेंट, इसके ये होते हैं, गोल्जी बॉडी बनाता है. तो प्रिकर्सर ऑफ व्हाट? सेल प्लेट, मिडिल लैमेला. ओके, बनाने वाला गोल्जी बॉडी है. सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोज बाय, सेकेंडरी सेल वॉल. तो पहले तो प्राइमरी सेल वॉल देखो. एक्चुअली क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल आपको मालूम है यूनिसेलुलर होती है ना, हमने पढ़ा है. प्राइमरी सेल वॉल बेटा होती है यूनिसेलुलर. अब इसमें जब ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी सेल वॉल दिस मच, प्राइमरी सेल वॉल दिस मच, तो इसके एक ही लेयर के बीच में डिपोजिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरससेप्शन, राइट. इंटरससेप्शन मींस डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन विदिन द लेयर ओनली. बट सेकेंडरी सेल वॉल, यू नो, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर. प्राइमरी सेल वॉल है ना, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेयर. New layer is deposited on the pre-existing material, right? So secondary cell wall grows by, this process is known as accretion or apposition or accretion. So apposition, secondary cell wall grows by apposition. Apposition. So the answer is apposition.
Pits are formed on the cell wall due to the lack of. Pits are formed. Pits simple भी हो सकते हैं, bordered भी हो सकते हैं. That is another thing. जब bordered pit होते हैं ना, तो कुछ material cell wall का आ जाता है जो parenthysome बनाता है. You remember, है ना? Parenthysome बनाता है. But otherwise, the pits are the connection between the two adjacent cell without the secondary wall. So pits are formed on the cell wall due to the lack of secondary cell wall, right? Out of the 4 classes of cellular macromolecules, macro acid insoluble macromolecule जो polymers होते हैं, जो acid insoluble, सारे polymers जो हैं वो acid insoluble है. कौन सा एसिड था? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, राइट, जिसमें हमने उसको पेस्ट बनाने की कोशिश किया था. सो जो मोनोमर्स होते हैं वो आराम से डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक मोनोमर था जो नहीं डिसॉल्व हो पा रहा था ना. आउट ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हिच वन इफ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? लिपिड तो है ही, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स है ही, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड नहीं. न्यूक्लिक नहीं है. Carbohydrate is also there, Hmm. right? So lipids are there, proteins are there, carbohydrate is there. The nucleic acid is actually the component of, not the cell membrane, it is the component of nucleus, which is not a connection between plasma membrane of adjacent cell. Desmosomes, proteinaceous, ये तो tight है. junctions, बिल्कुल है. Gap junctions is there. है. Transverse junction is not there. What are desmosomes? Protein, right? Filament. Tight junctions जो आपके ब्रेन वगैरह में होता है ना? Right? नर्व वगैरह में होता है gap junctions, right? Transverse junction is now in a disaccharide. Disaccharide, we all know, that is 2 monosaccharides. 2 monosaccharides combine and form disaccharide. 2 monosaccharides are linked by disaccharide for carbohydrate, right? It's for carbohydrates. So it is linked by glycosidic bond, ionic bond, hydrogen bond, disulfide bond, glycosidic bond. Glycosidic bond, yes, right? Glycosidic bond where क्या combine होता है? You should know the structure. You should know the structure. Like if it is glucose, right? 6 carbon and this is furanose ring. If it is furanose ring, then this is 1 carbon, then 2 carbon, then 3, then 4, then 5, and then 6. The same way, if the another glucose, right? Normal one. So this is 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. Here is the okay, so 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Here is the 4. This one is the 5th and the 6th and the 6th, right? So 5, 4, 1, 4. OH combine. क्या निकलेगा? H2O will be released. So this bond 1, 4, right? It will be combined with this bond is known as glycosidic bond. This is very important. So learn how to form that glycosidic bond, okay? Yes, ma'am. So the answer is glycosidic bond, right? The second one. Excess carbohydrates and proteins are stored in the body as excess carbohydrate and protein both. Fat. When we take good fats, very good. So excess carbohydrate and proteins, these are stored in the body as fats. Ribose sugar. Which type of sugar is ribose? Ketose or furanose. Furanose ring, very good. Very good. Furanose ring, 5-membered ring, right? Then pentose sugar. How many carbon? 5 carbon. 5. Okay.
5 carbon. Furanose ring. So it is ketose sugar. Very good. Ketose sugar. It is present in RNA. What is RNA polymerase? What is RNA polymerase? एक एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन में से किसी में हेल्प करती है। नेचुरली आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए फॉर्मेशन में काम लेगा, राइट? जैसे डीएनए से डीएनए बनेगा, सो दैट इज डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स. When DNA to RNA is formed in transcription, RNA polymerase will be used, right? So it's an enzyme. Enzyme है तो वो sugar से related नहीं होगा, है ना? If we analyze all the 4 options, then RNA, ribose sugar present in RNA, it's okay. What is ATP? Adenosine triphosphate. What is adenosine here? Adenine plus Yes. sugar. Yes, adenine, nitrogenous base plus sugar. So adenosine, right? So here also ribose sugar is present. RNA and see, RNA polymerase, RNA and ATP. This is the first option. The second option, RNA polymerase and ATP. Again, the enzyme. Here is the ribose sugar, but this is not made up of ribose. RNA and ATP and RNA only. And RNA only. So RNA only. Why not ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अभी अभी आपने बताया था, इसमें भी शुगर है, राइबोस शुगर, एडिनोसिन शुगर प्लस शॉर्ट थोड़ी हो सकते हैं कि राइबोस होगी या फिर डीऑक्सीराइबोस. बेटा एडिनोसिन, ओके, दैट राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइट? यस मैम. But if it is RNA, then it will be ribose sugar only, and the deoxyribose sugar will be formed from ribose sugar only, right? So adenosine, see, DNTPs और ATP पूछा है यहाँ पे, मतलब जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता तो भी हम फिर भी मान सकते थे. दिस इज ATP. एडिनोसिन, यहाँ पे राइबोस ही है. एडिनोसिन है ना बच्चा, तो इसमें राइबोज ही है. सो आरएनए में भी राइबोज आ रहा है और एटीपी में भी राइबोज आ रहा है. 2 तरह के होते हैं बेटा, होते हैं न्यूक्लियोटाइड फॉर आरएनए, एक होता है न्यूक्लियोटाइड फॉर डीएनए, है ना? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आता है ना, तब वो डीएनए से रिलेटेड होता है. जब राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा तो वो क्या होगा? तो एडिनोसिन राइबोस, एडिनोसिन. सो दिस इज 2 components here, okay, plus triphosphate. So RNA and ATP, what would be the answer? RNA and ATP. Yes, right. Now the next question. Which of the following statement is or are not true? Glycerol. What is glycerol? What is glycerol? CH2OH. CH3OH, CH2OH, CHOH, CH2OH. Why CH3OH, बच्चे? Why it is CH? Why it is CH2OH? Yes, CH2OH. ग्लिसरल्डिहाइड था ना, हमने पढ़ा था, CHO, CHOH and CH2OH. उससे बनेगा क्या? ग्लिसरॉल. All alcohol is there. CH2OH, CHOH and CH2OH, right? All these, this is a glycerol bond. 3 OH that serve as a binding site. Yes. Now the next one. Wax. How is wax formed? Ester bond, which is formed between alcohol and acid, right? Between a long chain alcohol and saturated fatty acid. There are 2 terms we have studied in lipids. First is neutral fat and the second is wax. Yes. जो न्यूट्रल फैट था वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टर है, बट जो वैक्स है वो any alcohol except glycerol. Very good. Any alcohol except glycerol, right? Glycerol. So
And generally that alcohol is monohydric alcohol. So monohydric alcohol, and yes, this is saturated fatty acid. This also we have to keep in mind, that saturated fatty acid and long chain, especially monohydric alcohol. So this is also correct. This one is correct. This is correct, right? They have asked us not true. The term protein was coined by Mulder. This is also correct. Protein terms ने दिया था, right? Cellulose किसका पॉलीसेकेराइड है भाई? किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज। Only glucose, है ना? Cellulose is a हम्म glucose polymer जिसमें ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, मोनोमर्स, देन हेमीसेलुलोज, देन पैक्टिन और कैल्शियम ब्रिजेस उसमें है. So indispensable polysaccharide, okay? It is a complex polymer of glucose and sulfur containing complex molecule of glucose. So which is not true here? डी ओनली। Which is not true? D. D is incorrect. Yes. Okay. D is incorrect. The next question. So D is incorrect. Carbohydrates are commonly found as a starch in plant storage organ. Stored food is a starch in plants, we all know. Which of the following 5 properties of starch, A to E, make it useful as a storage material? Why the plant stored carbohydrate in the form of starch? See, plants make food in the form of glucose. ग्लूकोज। They transport the glucose in the form of सुक्रोज। sucrose. They store the food in the form of स्टार्च। right. Now we have to find out why this starch is used for stored material. Easily translocated, easily तो नहीं होता, sucrose के नहीं। form में. Chemically non-reactive. यस This, मैम। yes, very good. This may be the reason because है ना, पॉलीसेकेराइड है ये, तो नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है ना. Easily digested by animal, not easily digested of course. Easily digested तो फिर ग्लूकोज और डाइसेकेराइड्स हो जाएंगे ना, सिंपल शुगर हो जाएगा. दिस इज कॉम्प्लेक्स शुगर. ऑस्मोटिक स्टार्च तो हम खाते हैं। खाते हैं स्टार्च, खाते हैं तो इट हैज टू बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड. ऐसा नहीं बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्टार्च. इजीली डाइजेस्टेबल फूड में क्या आएगा बच्चे? ग्लूकोज या फ्रक्टोज या लाइक सुक्रोज या जो सिंपल शुगर्स होंगी. स्टार्च इज जिसमें amylo pectin और that amylose chain and all is there. बोलते हैं ना white starch is very much complex to digest. बहुत easily digested नहीं होगा. Yes, amylase enzyme is used. Osmotically inactive, जब chemically non reactive है तो osmotically inactive होता है. Yes. Synthesized during photosynthesis, no. अब इसमें से कौन कौन से ज्यादा सही हो सकते हैं? Which of the following 5 properties? This is B and D. B is here. B is here. There is C, which is incorrect. So the option is yes. Chemically non-reactive and osmotically it is also inactive. So the third is the answer. During starvation, what will be the sequence of ending of foodstuff? Ending means digesting, using of foodstuff. सबसे पहले कौन सा easily digestible is? We all know. कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम सबसे पहले यूज करते हैं. उसके बाद में see, Harpriya, tell me that minimum energy is obtained from carbohydrate, right? उससे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है हमको? प्रोटीन से. अच्छा, प्रोटीन से, यस. और सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट्स। यस, है ना. तो
what should be the sequence of, using food? Carbohydrate, then protein, then fats, or fats, then proteins, then carbohydrate, or anything else? Fat. The sequence. फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले फैट, क्योंकि मैक्सिमम दे रहा है. नो, बट मैक्सिमम इसलिए देता है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है इसमें ऑक्सीडेशन का. बट इजीली डाइजेस्टेबल सबसे पहला इंस्टेंट सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट होता है. लेते हैं ना हम ग्लूकोज पानी में घोल के, व्हेन वी फील वीकनेस एंड ऑल, सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद में फिर बोलेंगे आप खाना खाओ या कुछ करो, है ना, तो फिर कॉम्प्लेक्स शुगर लेंगे. बॉडी में हमेशा सबसे पहले सबसे इजीली जो डाइजेस्टेबल होगा, अवेलेबल होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा. सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है. जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट. फैट लास्ट में डिसॉल्व होता है. क्यों ऐसा है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले यूज हो रहा है, उसके बाद फैट हम यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोटीन यूज कर सकते हैं, फिर फैट यूज कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है ना सब, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज करती है, उसके बाद फैट यूज करती है, उसके बाद प्रोटीन यूज करती है. समवॉट इट इज नॉट सीक्वेंस वाइज. कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन मिलना चाहिए, प्रोटीन के बाद फैट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. फैट पहले यूज होता है. प्रोटीन क्यों यूज नहीं होता? बॉडी प्रोटीन लास्ट में क्यों यूज करती है? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन स्टोर नहीं होता किसी प्रोटीन इज अ यूजेबल स्ट्रक्चरल फॉर्म. कंपोनेंट. प्रोटीन यस स्टोर नहीं होता है, फैट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का. इफ वी स्टार्ट यूजिंग प्रोटीन, देन प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड एंड फॉर्म नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच बिकम्स पॉइजनस. दे बिकम पॉइजनस फॉर अस. हमारी बॉडी के लिए वो पॉइजनस सब्सटेंस. तभी तो बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. हम नाइट्रोजनस वेस्ट आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर. नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती. ठीक है, जब भी डाइजेस्ट होंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, राइट, एंड देन इट विल बी रिमूव्ड. सो हमारी बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करती है, देन फैट एंड देन प्रोटीन. प्लीज कीप दिस इन माइंड. सो द ऑप्शन वुड बी व्हाट हैपेंड बच्चे? मैम बट नाइट्रोजनस वेस्ट तो एक्सक्रीट आउट करने के भी तो तरीके हैं ना. हाँ, है ना तरीके, तो हमको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है ना नाइट्रोजनस वेस्ट को. स्ट्रक्चरल तो कंपोनेंट है प्रोटीन हम डाइजेशन में क्या प्रोटीन को, प्रॉब्लम है? एक्चुअली हम यदि प्रोटीन को यूज करेंगे तो प्रोटीन स्टोर फॉर्म में नहीं है. आपकी बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके. हमारी बॉडी में, एक मिनट, हमारी जस्ट मिनट, हाँ, हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर फॉर्म में नहीं है ना. प्रोटीन तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे तो ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाएंगे. तभी तो जो स्टारवेशन, स्टार्व फूड, मतलब जहां पे भी आपने देखा होगा पिक्चर्स में ना, युगांडा और वहां की जो सारी, उसमें सब लास्ट में प्रोटीन डाइजेस्ट होते ही डीनेचुरेशन शुरू हो जाता है. डीनेचुरेशन शुरू हो जाता है मतलब बॉडी की डिफॉर्मिटीज आनी स्टार्ट हो जाती है. तब हम बोलते हैं कि इनकी बॉडी ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं, राइट? हाँ, यस मैम. एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों फैट के फॉर्म में यूज होता है, और फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड देन फैट विल बी यूज्ड. हम जब फास्टिंग पे होते हैं ना, तो इंस्टेंट एनर्जी तो हमको कार्बोहाइड्रेट है नहीं हमारी बॉडी में, ब्लड शुगर में, तो फिर फैट डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है. दैट गिव्स अस एनर्जी. ओके, नाउ which is the levorotatory? What is levorotatory? When the beam of light, polarized light Light falls is on, bent towards the left side. हाँ, yes, if left side rotate होती है polarized light, तो हम उसको levorotatory कहते हैं, और right side होती है तो हम उसको कहते हैं, right side होती है तो हम उसको कहते हैं dextrorotatory, right? Dextro and Yes, here is ma'am. the levo, जब left side होती है. Now levorotatory sugar, sucrose is what? Sucrose is dextrorotatory. जबकि sucrose बनता किसका है बच्चे? Glucose and Sucrose, fructose. yes,
उसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लेवो होता है, बट जब कंबाइन करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन जाता है सुक्रोज. सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. टेबल शुगर होती है ना, वो सुक्रोज की बनी होती है. ये जो टेबल शुगर हम काम में लेते हैं. ओके, व्हाट इज तो ग्लूकोज? मैम सुक्रोज में ग्लूकोज ज्यादा होता है फ्रक्टोज से. ग्लूकोज एंड सुक्रोज 1 to कंबाइन करके और बनता है सुक्रोज. ये तो इसकी So प्रॉपर्टी why है. is इस साइड sucrose क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, dextrose? क्योंकि बेटा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है कि जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है ना, जब सुक्रोज का बॉन्ड बन जाता है तो फिर वो सुक्रोज की प्रॉपर्टी हो जाती है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, वो लेवो नहीं रहता. ये तो How is this एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल कार्बन पे डिपेंड करता है. एसिमेट्रिकल कार्बन Okay. होती है ना जितनी, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एसिमेट्रिकल कार्बन पे है. तो इट्स इफेक्ट इज दैट सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो, right? Okay, ma'am. Glucose is also dextro. Dextrorotatory. Fructose is, Levorotatory. yes, levo. So which is levorotatory sugar? Fructose. Fructose. Please. Now the next one. Maltose. कैसे बनता है maltose? How is maltose formed? How is maltose formed? अभी हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइन करके और माल्टोज इज फॉर्म. ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइन करके माल्टोज फॉर्म. कौन सा लिंकेज है? 1,4 linkage. 1,4. Yes. Here is 6 carbon CH2H. Okay, here is 6 carbon CH2H. So maltose consists of which one of the following? Okay. बीटा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बना रहे हैं? Lactose. How is lactose formed? Lactose is also disaccharide beta. Glucose and galactose, it forms lactose. Glucose also aldehyde sugar, galactose also aldehyde sugar, right? Then Yes, glucose ma'am. and fructose form sucrose. Sucrose. Yeah. So alpha and alpha. Alpha sucrose, beta glucose. Again the same. Sucrose only. But it's beta. Beta sucrose. Maltose is formed as what? Glucose What and do galactose. sucrose and glucose? Na, maltose is made up of 2 molecules of glucose. ये रहा ना maltose. Okay. Yes, ma'am. Maltose, na. Maltose is alpha glucose, alpha glucose. Alpha glucose, alpha glucose. 2 molecules of glucose formed maltose. This one. OH, here also HOH. This is 1 carbon and here is also HOH. So 1,4 linkage, right? Alpha 1,4 linkage, 2 molecules of glucose. That is maltose form. So the answer is 4th. The answer is 4th. Okay. Now the next one. Which of the following would not give positive Fowling test? What is Fowling test? When the copper sulfate is used, right? Fowling test में जो reducing sugars होती हैं, कौन सी होती है reducing sugars? Reducing sugars which are simple sugar. Simple, that is monosaccharide or few disaccharides also. Monosaccharide and disaccharide, not polysaccharide. Monosaccharide and some disaccharides, they are reducing sugar. Now reducing किसको reduce करती है? Fowling solution में actually जो cupric होता है, it is this form. इसमें क्या बन रहा है? Cu2+. क्यूप्रिक को रिड्यूस कर देती है ये Cu2O में, that is Cu plus में. Cu2+, cupric is reduced to cuprous. That is reducing. They have any functional group, aldehyde या ketone का valence electron इनका बच जाता है, and that can reduce easily the cupric into cuprous. So the blue colored
will be changed into red PPT color. अब हमेशा ये याद रखो, जो भी मोनोसैकेराइड्स जनरली जो हैं वो सब रिड्यूसिंग है. डाइसैकेराइड में माल्टोस इज रिड्यूसिंग, then this lactose is reducing, only the sucrose is non-reducing. सुक्रोस इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है कि क्योंकि सुक्रोस की बॉन्डिंग होती है 1-2 बॉन्डिंग है. जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो 1-2 कंबाइन करते हैं. फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, और जो सुक्रोज जो फ्रक्टोज है उसका सेकंड कार्बन, क्योंकि फ्रक्टोज इज अ कीटोज शुगर, वहां पे कीटोन ग्रुप है. सो 1-2 लिंकेज हो जाता है, तो ना एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप बचता है ना कीटोन फंक्शन ग्रुप बचता है टू गिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लेकिन माल्टोज में क्या है, 1-4 लिंकेज है. एक का एल्डिहाइड काम आ रहा है ग्लूकोज का, दूसरे का फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड इंटैक्ट है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा. लैक्टोज में क्या है, अल्फा बीटा गैलेक्टोज है, लेकिन फिर भी 1-4 लिंकेज है. इसमें भी 1-4 लिंकेज है बच्चे, इसमें भी 1-4 लिंकेज है, इसमें 1-2 लिंकेज है. तो फोर्थ कार्बन यूज हो रहा है, तो फर्स्ट कार्बन का फंक्शनल ग्रुप इंटैक्ट है, वो दे सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसलिए माल्टोज डाइसैकेराइड है, पॉजिटिव टेस्ट. लैक्टोज डाइसैकेराइड है, पॉजिटिव टेस्ट. और इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्लांट जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो सुक्रोज के फॉर्म में इसलिए कर रहा है क्योंकि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, तो वो इनर्ट रहती है. इसलिए मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट जो है वो सुक्रोज के थ्रू हो रहा है. तो पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, ग्लूकोज देगा, यस. सुक्रोज नहीं देगा. फ्रक्टोज अपने आप में देगा बिकॉज 5 कार्बन सिंपल है ना, ये 6 कार्बन कीटोन शुगर है, 1 फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप. So glucose is also giving, fructose is also giving, lactose disaccharide होते हुए भी दे रहा है, yes. कौन सी शुगर है जो नहीं देती बेटा, वेरी वेरी, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो सुक्रोज इज द आंसर. What is the reason for that? That in this 1-2 linkage between glucose and fructose, so no functional group remains which can give valence electron. So the answer is sucrose. Find out the mismatched pair. Okay. अगर कैन यू टेल मी, अगर हमको कहां से मिला था? अगर मिला Red था alga. ब्राउन algae. Red alga, that is Gracilaria galledium. This is, if you remember, hydrocolloid colloidal substances Yes, था, ma'am. substance था cell wall के साथ. So Gracilaria and galledium, this is the agar which is used for nutrient medium, है ना. सारी बायोटेक्नोलॉजी लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम के फॉर्म में इसको यूज करते हैं. ये अगर वो है रेड एल्गा से जो मिलता है. किसका पॉलीमर है ये? अगर है पॉलीसेकेराइड, बट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड सल्फर कंटेनिंग, नो. एक्चुअली ये पॉलीमर है बेटा एक डाइसेकेराइड का, है ना. ये एगेरोबायोस डाइसेकेराइड है जो गैलेक्टोज के मतलब गैलेक्टोज एंड एक और कंपाउंड होता है उसके डाइसेकेराइड, उससे कंबाइन करके. सो पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज है डाइसेकेराइड. दिस डाइसेकेराइड इज नोन एज एगेरोबायोस. इसका बनता है ये, इट्स अ डाइसेकेराइड. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डेरिवेटिव है, एगेरोस बायोस जिससे बनता है, उस डाइसेकेराइड का पॉलीमर है अगर. तो ये सल्फर कंटेनिंग और ग्लूकोज का नहीं है. दिस इज नॉट करेक्ट. ग्लाइकोजन वी ऑल नो, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. काइटिन वी ऑल नो, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोजामिन. हाँ, है ना. गैलेक्टोजामिन, नैग जिसको अपन ने बोला था, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन. पेप्टिडोग्लाइकन वी ऑल नो, नैग एंड नैम लिंक टू peptide. Peptide Yes. chains. So find out the mismatched agar. Agar. See, agar is very important. Keep this in mind बेटा. इसका सोर्स क्या है, राइट? कहाँ मिलता है और क्या Yes. यूज होता है.
फॉर्मेशन ऑफ बोथ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड हो चाहे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो, इवन एस्टर बॉन्ड, इवन एस्टर बॉन्ड, इट इन्वॉल्व्स व्हाट? डिहाइड्रेशन। वेरी गुड, डिहाइड्रेशन। इसका कोई एक और वर्ड है? आप उसको कंडेंसेशन भी बोल सकते है ना, कंडेंसेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। द अनदर वर्ड इज Yes, ma'am. कंडेंसेशन, water molecule is released. So formation of peptide bond and glycosidic involved condensation, right? The differences between one amino acid and another, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड में मेनली क्या फर्क है? डू यू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, हरप्रिया? बेसिक Yes, स्ट्रक्चर ma'am. क्या है? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, सो भैया अमीनो Chiral एसिड है ना, carbon COH NH2 गुड, वेरी H गुड, वेरी और R गुड. group. Yeah, what is R group known as? Actually, this Variable R group is what? This is side chain. This R forms the side chain. So the amino acid differs in that R. The simplest amino acid, Harpriya? The glycine. Yeah. There the glycine में R जो है वो H हो जाता है. जैसे इससे जो कॉम्प्लेक्स है वो है एलेनिन. Here the alanine में RCH3 हो जाता है. Right? So the difference between one amino acid and another are found in which? What would be the answer? R group. Yes. Now the next. The helical structure of protein is stabilized by. Helical. Can you tell me helical structure protein का कौन सा degree है? This is secondary 2 structure. degree. 2 degree. Yes. So this is secondary structure. Okay. Primary structure is stabilized by. जो linear chain है वो किससे stabilized होती है? Peptide bonds. पेप्टाइड बॉन्ड्स. और हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? Hydrogen bonds. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसको हम लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं. जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हेलिक्स है ना, या फिर शीट के फॉर्म में, बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में. तो जो हेलिक्स होगा वो किससे स्टेबलाइज होगा? पेप्टाइड बॉन्ड तो इसमें है ही, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड में क्या ऐसा होगा जो एक और बॉन्ड बना देगा? विच बॉन्ड इज देयर Hydrogen इन? bond. वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्ड. वो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? COH और NH2. वेरी गुड. जो O है और NH का H है, राइट, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है. सो दैट गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ दैट प्लीटा शीट, और है ना हेलिकल स्ट्रक्चर. Yes, सो ma'am. द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड not by peptide, because this is the helical नहीं है, straight linear structure of protein is stabilized. The helical structure is stabilized more of what? Because of hydrogen bond. Hydrogen bonds. Yes. Phospholipids कहाँ होते हैं बेटा? phospholipids are important Membrane. cell membrane में होते हैं. क्या structure होता है इनका phospholipids का? Glycerol, Bilayer. amino acid और phosphate. No, glycerol, amino acid and phosphate. We are just considering here phospholipid. Phospholipids जो होती है उसमें phosphate है ना, बाइलेयर है. आपको इफ यू रिमेम्बर हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, इफ यू रिमेम्बर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था. ये क्या है बेटा? ये नॉन पोलर फैटी एसिड की चेन है ना. इसको हम क्या बोलते Yes, हैं? ma'am. इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक. ये कहाँ होती है? ये सेंटर में होती है, इनर साइड होती है. आउटर साइड क्या है? इनर साइड नॉन Hydrophilic head. हाइड्रोफिलिक हेड. वेरी गुड. सो इट इज हाइड्रोफिलिक है. अब हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये पोलर है, राइट. सो जो आउटर इज पोलर, इनर इज नॉन पोलर. आउटर इज हाइड्रोफोबिक, इनर इज आउटर इज हाइड्रोफिलिक, इनर इज हाइड्रोफोबिक, राइट. एक्चुअली इस बाय लेयर से बहुत फर्क पड़ जाता है. ये क्या करता है, पानी में जब जाता है तो ये वाटर में दोनों लेयर बना लेता है, क्योंकि बाय लेयर बन जाती है वाटर. इसलिए ये इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट फॉस्फोलिपिड्स, और इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है. फॉस्फोलिपिड्स आर इम्पोर्टेंट
cell membrane constituents because they contain glycerol. They can form bilayer in water. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों बना लेती है, जिसकी वजह से इजीली प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल के फॉर्म में अलाउ कर देते हैं. सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती. इट इज सेलेक्टिवली परमेबल, और उसके बीच में जो प्रोटीन्स होंगे फिर वो चैनल प्रोटीन्स बनाएंगे. सो इसके नेचर के लिए दिस फॉस्फोलिपिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Combined covalently with protein contain both. See, because of this, polar and non-polar, and it can form bilayer in water. So most appropriate answer will be what? It can form bilayer in water. Is it clear? Is it clear? Yes. So it can form bilayer in water. Next, which of the following is not an unsaturated fatty acid? Oleic acid. सैचुरेटेड, एक डबल बॉन्ड होता है. अनसैचुरेटेड होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है. स्टेरिक एसिड सैचुरेटेड, कितने कार्बन होते हैं इसमें? दिस इज ऑफ 18 कार्बन सैचुरेटेड. बेटा पामेटिक सैचुरेटेड था जिसका 16 कार्बन था. स्टेरिक एसिड का 18 कार्बन है, सैचुरेटेड है. लिनोलेइक एसिड, दिस इज, हाँ, 2 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें. लिनोलेनिक 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड है. सो विच वन इज नॉट एन अनसैचुरेटेड? सी द ट्विस्ट, नॉट एन अनसैचुरेटेड. व्हाट डज इट मीन? सैचुरेटेड. कौन सा फैटी एसिड सैचुरेटेड है? स्टेरिक. एरिकिडोनिक, वेरी इंपॉर्टेंट. प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. दिस इज द ओनली बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो मैमेलियन टिश्यू में मिलता है, याद रखना. मैमेलियन टिश्यू में मिलता है, ठीक है, एग्स में और इनमें भी मिलता है. सो दिस इज एरिकिडोनिक एसिड, इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ हाउ मेनी कार्बन? 20. इसमें 6 डबल बॉन्ड होते हैं बेटा एरिकिडोनिक एसिड में. पॉली अनसैचुरेटेड इसलिए इसको कहते हैं. क्लियर? Yes. What is the common point for similarity between DNA and RNA? Both are polymers of nucleotide. बाकी डबल स्टैंडर्ड नहीं होते दोनों. आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है. शुगर अलग होती है, पिरिमिडीन अलग अलग होता है. यस, यूरेसिल होता है उसमें. व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट. Phosphoric acid. 4. Nucleotides are building block of nucleic acid. Each nucleotide is a composite molecule formed by base is base, sugar and phosphate is the answer. 4th में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि फिक्स्ड नंबर होता है, n नहीं होता बेटा. ये नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 4 है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट है. समझ रहे हो? बेस, शुगर, फॉस्फेट, n नहीं होता.